And one thing which have happened last year, as you know, yoga has been recognized by United Nations. And now it's a worldwide movement. So India is coming in a new way in the world order. And for the last 60 years, some of the things which we have lost, we are trying to revive it. In fact, if I say that India has overtaken Bharat, it will not be wrong. Whatever glory the past has, this was not told to our students in India. The system of education here has been such, which have been continuing what British government has evolved, what Macaulay gave to this country and so on. And over and above, what happened, that our constitution declared India as a secular state. But this secularism was misused by our politicians and used as a tool for their bank vote. With the result that 80% population, its feelings, its sentiments, its emotions, its attachments with past have been challenged by 20% people. And a good deal of effort has been made to wipe out some of the things which have been done in past by our rishis, munis, our great emperors, and so on and so forth. But sir, I can assure you that we are now in a process to revive it and to put India into its true perspective. There are a few issues which have emerged in course of discussion in this session, and I would just like to make a few remarks over that. The one has been the problem of the new generation, that it doesn't look upon the things as the old generation has been looking upon. Well, in the history we find it has always been happening, a generation gap is always there. How to make the coming generation to understand what you feel and what is true perspective, it's not easy. Particularly in a globalized economy where the situation has become quite difficult. Joint family system in India, for instance, have been a great institution for thousands of years. And it has also been a place for the education of the young generation. I remember my mother, for instance, she was not literate, but she could tell me a lot of stories from Ramayana, Mahabharata, from epics and from our old scriptures and so on. And she has been so educating that I don't consider her less than any teacher. And I'm sure this must have been with most of you in your family, your elders, your elder brothers, your father, your grandfather, your relatives, and so on and so forth. Rituals and traditions which have been built over years, over thousands of years, they are still there with us. Even today, you have a saptapadi in the marriage. Whether you understand its meaning or not, but you are performing it. So, there are traditions, there are rituals, there are customs in this country which have survived thousands of years because of the type of family system and also because of the type of education which was there in the past and the social structure which this country had in the past. And I'm sure, although things have gone wrong in our middle ages of the history and even after independence for the last 50, 60 years, but we are in a process of revival. And the young generation has to be told, it has to be educated in a way that it becomes, there is a love, there is attraction created for their culture in their minds. There was a very good paper which was presented by Professor Narayanan, if I understand, as to what are the core values of Hinduism, and where he emphasized that these core values must be taught to the students, and I think
These are the things which have to be taught to the students, not only in America or where the Pravasi Bhartis are there, but also in India also we need to educate these things. But what good thing, as Professor Sharma has just mentioned, that even though people may not have Ramayana in their house, but internet, through pictures, through films, through other things, through television, there is a lot of exposure of Indian culture today. And this is of great educational value. And the young generation is coming to understand what exactly Hinduism has been. Then there have been some of the issues raised about, for instance, Professor Conrad said that he expressed some of the some pessimism about Hinduism and said that it may die or something like that. But let me assure you, sir, that Hinduism has not been, it couldn't be destroyed even after thousands of attacks which took place from different corners of the world. Even though India was enslaved for about 1,000 years, but Hinduism survived, or what you call Sanatan Dharma survived. It's real Sanatan Dharma. That is something which is eternal, which is there, given by our Vedas. So when they say, our rishis said, Sarve Bhavantu Sukhina, or when they said, Vasudhaiva Kutumbakam, or when they said, Sangachadvam, Sambhadadvam, like these things, they meant it. And India lived to those values. And India will live to those values, and there is no question of Sanatan Dharma being wiped out by any force in the world. This I can assure you. We are very glad to listen to Professor Pal and the efforts which he is making in England to educate children and through Sanskrit, and the type of pioneering work that he is doing now in the West to popularize Sanskrit. And as he has said, and as we all know, that Sanskrit is the mother language of all languages in this world. And teaching of Sanskrit, unfortunately, has not been given that prominence in this country, which is there because of Sanskrit. Because our entire root, or the cultural roots, lie in the Sanskrit language and Sanskrit literature. But it has been ignored all through last 60 years or so. And I hope the new government, and we will pray that the government does it, that make Sanskrit compulsory for all children in India, so that they get better insight of what India has been. Then there has been issue raised about the waves and working of the wave, and I must say that we are here because of Professor Bhudev Sharma. And I must say, he has established Delhi branch. I suppose it was in 1996 or something like this. 96. Yes. He has started WAVES, World Association of Vedic Studies, United States. Professor Balram Singh, Professor Shah, Kejriwal ji, and all these people who are working there. And the type of effort they have been doing, we must appreciate that people who are not in India, people who has gone from here, served United States and other countries in the world. In fact, they started something which we should have done. They gave us inspiration. And therefore, I must give my appreciation from your side, and have a big clapping for those people who did this job in India. Well, friends, a lot of paid work has gone for this conference. Professor Dr. Ashok Pradhan has given us immense help. Because of courtesy of Vidya, we are sitting here. Dr. Shashi Tiwari
had done tremendous job, and in spite of many arts which I have been observing and which you might also have seen, she made this conference a great success. And it was said in the inaugural session that it's a unique conference. And after these 4 days, I feel, yes, it has been a unique conference. I have attended some of the international congresses organized by WAVES, and also almost all the conferences which WAVE has organized in Delhi. But I think the response we got this time from young scholars have been tremendous. They have put in very good papers. And the type of research which I now find, which is going on in Indian universities in Sanskrit, this is going to be a landmark for our future and going to help the new generation to understand Sanskrit in a better way, and also the Vedic literature in a much better way. Well, I am reminded of a slok which my teacher of Sanskrit used to tell me, that is, Ajramarot pragyo Vidya martha chinte grihite yukeshesu mritunam dharmam chare. So we are all here to learn, and we are here to learn for the whole life, because there is no end to learning. Conferences of this nature provide us opportunity to learn, to interact with people who are much more knowledgeable than us. And this conference has proved it. I'm also reminded of saying of Kautilya, because I have been a student of economics and I have tried to study the great philosopher and economist of the world. While writing Arthashastra, he said, at many places he quoted, Brihaspati said like this, Shukracharya said like this, Yagyavalkya said like this. But if Kautilya didn't agree, then he says, I say like this, and then he gives argument. He gives logic and prove it, why he doesn't say, I don't agree with Brihaspati or Shukracharya or Yagyavalkya. This is a tradition of this country. Shastrarth, for instance, is a tradition of this country. You all know the story of Yagyavalkya. You all know the story of Mandan Mishra and Adi Shankaracharya and others. How the things have been deliberated in past, and the cream had come out of those deliberations, which have made this culture great. So, at the end, friends, I must thank you all for your cooperation and being here with us in the wave and making this conference a great success. Thank you. आदरणीय प्रोफेसर ललन प्रसाद जी ने बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित तरीके से वेव्स के उद्देश्य को रखते हुए अपनी ये जो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई उसके समापन सत्र में अपने उद्बोधन में अपने उद्गार रखे, और हमने देखा कि कैसे उन्होंने जो एक थोड़ी सी डगमगा गई थी हम आस्था की फ्यूचर जनरेशन जो है वो कुछ करेगी या नहीं करेगी, उसको उन्होंने वापस रिस्टोर किया है। और मैं तो कभी निराशावादी होती ही नहीं हूँ, क्योंकि वेद ने आशावादी रहना सिखाया है। जीवे में श्रद्धा शतम, पश्ये में श्रद्धा शतम, शृणुयाम श्रद्धा शतम, भूयाश्च श्रद्धा शतात। 100 हो जाए उसके बाद भी 100 ही चाहिए। तो ये जो आशावाद है, ये एक आशा की लहर आपने जगाई, और जैसा कि वो हरिराम मिश्रा जी कह के गए थे, सर्वभूत, तो यही तो 2 एसेंस हैं वेद के। और हमने इस गोष्ठी और सम्मेलन में यही सीखा, वेलफेयर ऑफ ऑल, दिस इज द एसेंस ऑफ द होल यूनिवर्स, एंड द सेकंड इज वी शुड नेवर गेट आवर होप लॉस्ट। सो यंग जनरेशन के यहाँ पर बहुत प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते हैं, आधे से ज़्यादा तो यंग लोगों ने ही इसमें भाग लिया और काम किया है, और वो जानना चाहते हैं।
हम सब लोग इतने सीनियर हैं, हमें पता है कि बीज होगा तो पेड़ उगेगा ही उगेगा, निश्चित है। संस्कार होंगे तो वो उसका फल आएगा। इस तरह से उनमें संस्कार हैं और उनमें बीज हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समस्या है कि वो जो उनका समय और जो कार्य करने का टाइम है, उस समय वो इन चीज़ों में नहीं दे सकते हैं। ये सारी दुनिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी घर घर में सबको पता है। तो इसलिए आशा रखनी चाहिए और जब समय आएगा तो वो उसमें शरीक होने लगते हैं। अभी वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और वेद की ये वेव्स की इस कॉन्फ्रेंस में हम दोनों और तीनों चारों बल्कि अगर पीढ़ियाँ हैं तो उनके लोग यहाँ पर रहे हैं, इसलिए ऐसा किसी के प्रति कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल कर ही काम कर रहे हैं। और इसमें जो ये समापन सत्र होता है उसमें हम हमेशा ही आप लोगों की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें मैंने देखा है कि ऑडियंस से थोड़े रिमार्क्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अब समय की क्योंकि कमी है, लेकिन फिर भी एक बहुत आदरणीय हमारे श्रोता रहे 4 दिन, आचार्य सनत कुमार, जो वेदार्थ कल्पतरु गुरुकुलम पंचकुला से आए थे और 4 दिन जिन्होंने यहाँ पर बैठे हैं, देखा है। बहुत ही आपसे निवेदन है 2 मिनट में आप अपने विचार यहाँ पे रखें, 2 मिनट। सभी को सादर नमस्ते। जो वैदिक ज्ञान के वैज्ञानिक पक्ष से जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें मैंने भी भाग लिया है। तो इसमें और क्या हो सकता है, इसका क्या लाभ समाज, राष्ट्र और विश्व को हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष आदि का सबका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। देखिए, आज संसार में ग्लोबल वार्मिंग नाम की एक समस्या है जिसका किसी वैज्ञानिक संस्था के पास में अभी तक कोई समाधान नहीं है, चाहे वो नासा हो या दुनिया की कोई भी संस्थान हो। किंतु हमारे वेदों में, अपने कार्यक्रम का ही देश विदेश में नाम रहता है संसार की ज्वलन समस्याओं के वैदिक समाधान। वेदों से उसका समाधान क्या हो सकता है। आप देखिए, दुनिया में 21 जून को क्या होता है, योगा डे। ये योग विद्या किसकी है, वेद की। उसी वेद की एक विद्या भी है यज्ञ, हवन, होम, सोमयाग। और योग के वेदों में मंत्र अगर ढूंढेंगे तो 500 से ज्यादा नहीं है चारों वेदों में, किंतु यज्ञ के लिए 5000 से ज्यादा हैं। और 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 श्रोसूत्र है। और हमारा पैदा होने से लेकर मरने तक सारा कार्य हवन से ही होता है। तो हवन सामान्य कैसे हो सकता है, तो उसी को लेके हमने कुछ प्रयोग किए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM10, PM2.5 ये 70% से कम हुआ। अभी हमने दिल्ली में किया, रिपोर्ट मेरे पास सारी है, दिखाने का समय नहीं है। दूसरा, जो माइक्रोबायोलॉजी की दृष्टि से जो बैक्टीरिया आदि हैं, और सीवरेज लाइन जो पानी है उसको भी हमने कलेक्ट किया, एक सैंपल लेबोरेटरी में भेजा, दूसरा यज्ञ के पास ट्रीटमेंट किया, तो उसमें भी 60% से ज्यादा वायरस आदि किलिंग होंगे। तो ये कुछ बातें हैं। यदि वेव्स इस कार्य को चाहे तो दुनिया में पुनः जिसकी हम कल्पना करते हैं, सर्वव्यापी सुखिनः भवन्तु। क्योंकि फार्मिंग, यज्ञ कहां काम नहीं करता। आज 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार पेस्टिसाइड, यूरिया और जो उसकी लोगों, किसानों को पैसा देती है, और ऊपर से वही बीमारियां हमें वापस आती है, उनको संभालने के लिए फिर पैसा लगाती है। तो जितनी भी वर्षा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वायरस है, प्राणो यज्ञेन कल्पताम, मनो यज्ञेन कल्पताम, मेधा यज्ञेन कल्पताम। यज्ञ के द्वारा बुद्धि से लेके जितनी भी सारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। तो मैंने ये कुछ बातें आपके सामने रखी। संसार की ज्वलन समस्याओं का वैदिक समाधान यज्ञ। ओम शांति शांति। बहुत धन्यवाद। ये जैसे कि बात हुई, इस कॉन्फ्रेंस में 3 जनरेशन के लोगों ने भाग लिया। उसी तरह से 3 संस्थाओं ने मिलकर ये आयोजन किया, भारतीय विद्या भवन, वेव्स इंटरनेशनल, वेव्स इंडिया। उसी तरह से 3 भाषाओं में यहाँ पत्र पढ़े गए, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। और अभी भी इस मंच से तीनों भाषाओं में लोगों ने बातचीत किया है। और इसी तरह से 3-3 करके बहुत सी बातें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन वो उनका समय नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में यहाँ पर धन्यवाद का पुनीत कार्य निर्वाह करना चाहूँगी। इसमें पूरे कॉन्फ्रेंस में 130 पत्र पढ़े गए, जिनमें से बाहर से 28 या 30 के लगभग विद्वानों ने भाग लिया, जो 6 कंट्रीज बाहर के देशों से आए हुए थे।
और जिनमें भारत के सभी प्रांतों के लोग थे, दूर दूर के प्रांतों से लेकर सभी प्रांतों के लोग थे, और जिन्होंने यहाँ पर किसी भी कार्य के आयोजन में संस्कृत और वेद पढ़ने वाले जानते हैं कि 3 तरह की शक्तियों का योगदान होता है। अभी ललन प्रसाद जी अर्थशास्त्र कह चुके हैं, ये वहीं पर है। प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति। प्रभु शक्ति जो उसके पास ताकत हो कि वो कुछ कर सके, राजा के लिए हैं ये सब बातें, लेकिन हर कार्य में करने के लिए वही नीति नियम लगते हैं। तो प्रभु शक्ति मेरे पास थी। ये बहुत तीनों संस्थाओं ने मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र रखा हुआ था, जैसे चाहे मैं वैसे कार्य करूं, अपनी बुद्धि से करूं। लेकिन दूसरी शक्ति मंत्र शक्ति थी, जो हमारे बलराम जी हमारे पीछे थे मंत्रणा देने के लिए। जहाँ कोई अड़चन रुकावट वो मंत्रणा देते थे, वो मंत्र शक्ति का कार्य कर रहे थे। किसी भी टाइम पर कार्य को कहीं पर भी रोककर टिक लगाकर उसका करेक्शन किया जाता था। और मैं एक राजा की भांति, जो कि एक थोड़ा सा कम बुद्धि का राजा है, उसकी भांति मंत्री की बात सुनती चलती थी। और तीसरे शक्ति होती है उत्साह शक्ति। जो सेनापति होता है वो उत्साह शक्ति होती है, जो राजा का बीच बीच में उत्साह बढ़ाता जाता है और खुद कुछ करे ना करे मगर उत्साह बढ़ाता जाता है और उससे काम लेता जाता है। वो हमारे धीरू भाई जी थे, जो बीच बीच में हमारा उत्साह बढ़ाते जाते, कुछ 1-2 प्रशंसा के वाक्य लिख देते और उससे मैं 1 हफ्ते तक और काम कर लेती। तो ये तीनों शक्तियाँ मुझ में जगा कर मेरे से काम लिया दोनों वेव्स ने, और उसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जब यहाँ पर आयोजन के लिए हम एकत्र हो जाते हैं तो बहुत तरह के और फ्रंट भी खुल जाते हैं, और उनमें कार्य करने में सब बच्चों ने और हमारे छात्रों ने, और मैं उनको भी छात्र कहती हूँ जो यंग टीचर्स हैं, बहुत बार गलती भी हो जाती है। वो भी रंजीत बहेरा तो अभी रीडर हैं यूनिवर्सिटी में, मगर मैं उनको छात्र कह देती हूँ। तो इन सब लोगों ने मिलकर भाग लिया, और उनके एक एक के नाम यहाँ लेना मुश्किल है, फिर भी कुछ नाम मुझे लेने हैं जिन्होंने वॉलेंटियर के रूप में बाहर बैठे रहे और इस कमरे के अंदर बैठे रहे या हॉल में। कृतिका मोहन, आप लोग मंच पर आइए। गरिमा वैद, मोहित शर्मा, विकास शर्मा, सत्यम, आकांक्षा, वनिता यादव, रेखा कुमारी, सुरुचि शर्मा, स्वाति पॉल, अपर्णा धीर, सुप्रिया, संजू, उमेश सिंह, तहसीन मंडल जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हुए थे और 4 दिन तक वो भी यहाँ पर कार्य करते रहे। इनमें से बहुत से लोगों ने पेपर भी पढ़े हैं और उन्हें सर्टिफिकेट उसी समय मिल गए, लेकिन जिनको नहीं मिले उनको अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तहसीन आइए। इन्होंने फोटोग्राफी का कार्य निभाया और दौड़ भाग का कार्य किया। ऐसे सबने मिलकर ये कार्य संपन्न किए, क्योंकि बहुत जगह जब कार्य शुरू होता है तो उसको निभाना पड़ता है। जो मेरे आप भी आ जाइए, प्रेम आप भी आ जाइए, और विरमा तुम भी आओ। एक मित्र मंडली भी होती है जो कि आपका उत्साह बढ़ाती है और आपको सहयोग देती है। उनमें से कुछ का नाम भी मुझे लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वेदवती वैदिक, जो कि रोज 4 दिन यहाँ पर आई, मैंने कभी नहीं देखा वो 4 दिन कहीं पर भी जाएंगी। और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी भी पहले दिन आए थे और बैठे रहे थे आधी दूर तक। उसके अलावा सरोज गुलाटी, डॉक्टर धर्मा और डॉक्टर सुषमा चौधरी, जिन्होंने इन्वोकेशन करवाया था कमला नेहरू कॉलेज से, और ये कानपुर से आए हुए नीलम त्रिवेदी जी, ललिता, एक एक का नाम मुझे पता है, शकुंतला पुंजानी,
जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हैं, रंजीत बहेरा आप सब जानते हैं, डॉक्टर सतीश शंकर, 3 चैप्टर्स के प्रेसिडेंट ने यहाँ पर हमारे साथ शरीक हुए। डॉक्टर राम गोपाल जी जो अपने 1-2 प्रतिनिधि भी लाए थे जोधपुर चैप्टर से, डॉक्टर CL प्रभाकर जी जो बेंगलोर चैप्टर को हैं। अभी इनको भी उत्तराधिकारी ढूंढना पड़ेगा, जिसकी आप लोग को चिंता होती है। सभी जगह ये समस्या है, खाली बाहर विदेश में नहीं। और तीसरे हरिद्वार जो चैप्टर है उससे प्रतिभा शुक्ला भी वहाँ की जो कार्य देख रही हैं वो भी यहाँ पर आई हुई थी, इस समय नहीं है। तो ये सब लोग यहाँ पर आए हुए थे और जो हमारे मार्ग दिखाते समय समय पर प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी, प्रोफेसर गणेश शर्मा जी, वाधवा साहब, डॉक्टर चांद भारद्वाज जी, प्रोफेसर बजाज, हमारे मदन लाल गोयल जी, आप तो दोनों तरफ हैं इसलिए मैं इधर से भी बोल सकती हूँ। तो रजनीश शुक्ला पीछे बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रीय संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीछे द्विवेदी जी आप खड़े हुए, ये अभी कल ही मेंबर बने, बिल्कुल अंतिम मेंबर यही बने। ये ऐसे समों पर हमारे कुछ मेंबर्स भी नए बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत प्रभावित होते हैं। और रात को इन्होंने 8:30 बजे चेक दिया है और ये मैं तो कह रही थी कल दे देना, तो किसी ने बोला अभी इनका माइंड बदल ना जाए, ले लो। तो ये कॉन्फ्रेंसेस में ही हमारे सालाना नए मेंबर्स भी बन जाते हैं और आप अभी हमारे मेंबर विशेष मेंबर हैं। तो और इस तरह से बड़े सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेम को तो आपने अभी और एक बार इनका योगदान देखेंगे, हम ये वंदे मातरम भी गाएंगे। प्रेम देवली जब भी कहीं पर संकट आएगा, हमारा वंदना के लोग, ऋषिराज आए नहीं जो आपने नाम देखा क्योंकि सेंट स्टीफेंस में कोई दुर्घटना हो गई है तो उसके स्थान पर इन लोगों ने ये कार्य संभाल लिया था। तो यही सब बातें कहने को बहुत कुछ है, लेकिन प्रोफेसर RP सिंह जो को-चेयर रहे वो भी अपने दूसरी तरह से हमें योगदान देते रहे। एडिटिंग में थोड़ा बहुत उन्होंने हमारा वहीं से अपने घर से ही कंप्यूटर के द्वारा कार्य करके बताया। तो इस तरह से उनका कॉन्फिडेंस हमें पैदा किया और डायरेक्शन भी देते रहे। एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर भूदेव शर्मा जी ने जो पॉइंट आउट की थी, तो उनको भी ये बताना और आप सभा को सबको बताना मैं चाहूँगी और मुझे बड़ी खुशी बताते हुए कि ये वेव्स इंडिया की कॉन्फ्रेंस जो वेव्स 20वीं कॉन्फ्रेंस 20 साल का ये हो गया बालक जो भी है, तो इस बार की ये कॉन्फ्रेंस बिना एक भी पैसा खर्च किए हुई है क्योंकि इसका सारा खर्चे का जो फंड है वो श्री शशि केजरीवाल जी या कि वेव्स इंटरनेशनल के द्वारा दे दिया गया है। इसलिए ये वेव्स इंटरनेशनल की ही कॉन्फ्रेंस पूरी है और हम उसमें सहभागिता निभा रहे हैं। और भी कुछ रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। विद्वान जो आए आप जैसे लोग, उनके लिए धन्यवाद मैं क्या दूंगी, वो तो आपको बड़े बड़े लोग हर सत्र में भी दिया जाता रहा है। आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया और लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ जो कहा था वो अंतिम यहाँ जो आज वक्तव्य हुआ वहाँ पर आकर वो ठहर गया था। तो आप दोनों तो बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे लगता है कि आपने जो कल बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस की बात उठाई तो इन लोगों को देखकर उठाई कि इतने प्रबुद्ध जो हमारे वैदिक साइंटिस्ट लोग हैं अगर देश में, तो यहाँ निराश होने की कोई बात नहीं है। आप दोनों से आप लोग परिचित ही हैं। प्रथम सत्र में थे निष्काम शांता जी और विज्ञान मुनि जी। आप दोनों IIT के जो कि देश में हमारे सबसे बड़ी संस्था मानी जाती हैं, उनके बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, PhD किया हुआ है और फिर वैदिक ज्ञान में गए हैं। तो इसलिए निराशा जैसी कोई भी बात नहीं है। उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमें यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एज और समय के साथ थोड़े दिनों में लोग अपने आप इस ज्ञान को समझने लगते हैं। उनके प्रति आदर तो है ही, और मैं तो हमेशा क्लास में भी कहती हूँ और यहाँ भी कहती हूँ कि चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। जब वेद तो श्रुति ज्ञान है, वो तो याद करके ही चल रहा था। फिर बीच में 13-14 साल दूसरे लोगों ने राज्य किया, आक्रमण होते रहे, तब भी वो सुरक्षित रहा है। तो अब तो देश स्वतंत्र है, अब तो कोई रुकावट ही नहीं है। अब तो सारा कुछ डिजिटलाइज भी हो चुका है, इंटरनेट में भी पड़ा हुआ है। अब तो कोई खोने का कोई भी संभावना है ही नहीं।
तो इसलिए ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसका मूल्यांकन अभी होने लगा है और वेव्स उसी कार्य में लगा हुआ है। शुरू में कहा गया 3-3 के बात यहाँ पर हुई थी और मैं आखिरी बात उसी से समाप्त करूँगी कि 3 यहाँ पर जो संस्थाएं थीं उसके 3 लोग जो प्रमुख थे, कार्य कर रहे थे, वो तीनों शशि थे। आप सामने आएंगी। भारतीय विद्या भवन का जो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी हेड जो है, डीन है, वो शशि बाला। वेव्स इंटरनेशनल के शशि केजरीवाल जी। तो 3 शशियों ने मिलकर ये वेव्स को कॉन्फ्रेंस को संपन्न किया है। और इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ धीरू भाई जी से कि आप इस अवसर पर 2 शब्द कहें और इसके बाद प्रेम आप शांति पाठ और वंदे मातरम करेंगे। फोटो भी ग्रुप फोटो भी बाद में होगा। शशि जी, यदि अपनी पूरी पंचांग सब कुछ चंद्रमा पे बेचते तो शशि नाम क्यों नहीं होना चाहिए? I know that you are all hungry. Are you? No. You're not hungry? You're hungry. Food for soul. Food for soul. I am supposed to do the last part of the work to thank what a wonderful conference has been. But before that, I'd like to say some of the things what Budevji has said, that some people have asked me that as a non-academic, why are you in waves? What have you to do with waves? I'm basically an economist and a financial man. And when I was at London School of Economics in 1960, I was a Marxist and socialist because that's what we were taught in terms of that Soviet Union was the country which has come up, and that is the method that every country should adopt. But over a period of time, I realized that that is the fallacy. So when you are young, you are a Marxist. When you grow old, you become a capitalist. So over a period of time, we realize that young people today, they follow what the teachers tell. So when you go to a school or when you go to a college, it is not the parents, it's not your elders, it is what your teacher tells you and what the books tells you. So in the United States or in India, today the young people listen to their own teachers and what they teach. As a result, what is happening in the United States, and I have been for last several years been trying to get young people into waves without any success. We brought 2 people, young people, and we expected them to perform. Unfortunately, not that that is their fault, but they have to take care of their families, they have to take care of their economic needs. As a result, they cannot devote much time. We have tried with various other people who are retired people, why don't you join? They don't have time. So it is not that efforts have not been made. Enough efforts have been made to bring in a lot of people, and in this conference we have realized there are young people who have been interested in joining waves, and so we are going to do that. Finally, I'd like to start saying that this conference would not have been possible at all, in a sense that when we started this, we thought that we will be going to GNU, and unfortunately, logistic problems we had to be taken into consideration, and so at that particular juncture, we were very lucky that we got Bharatiya Vidya Bhavan to give us this opportunity to have the function here. So I'd like to thank Mr. Ashok Pradhan, the director of Bharatiya Vidya Bhavan, who has been very kind, and without asking for a single penny, he has given this place with all that support, so we are thankful to that. I would also like to thank the staff of the Bharatiya Vidya Bhavan who have been sort of helping us to organize this program. So, you know, we are really grateful to those people. I'd like to also thank our invited guests, and I'd just like to name some of them. Dr. Shantaji, thank you very much. It was his, I did not know him. And when somehow or other I got involved in his thread where they were discussing life comes from life,
And so for 1 year, I was listening and reading all that, and eventually I thought that I would like him to join us, and so very kind of you that you joined that. Thank you. Would like to also say Indrani Ramprasad. Where is Indrani? He's gone. She's gone. Yeah. Jeffrey Armstrong. Thank you. Michael Stunfield. Thank you. Professor Narari Achar. Thank you so much, sir. John Keenan. Robert Snyder. I think he has left probably. Conrad. Great man. Thank you. Professor Jagannathan. Probably he's left. Madan Lalji. Madan Lal Goelji, I think. Oh, thank you very much. So some of these are the guests which we have invited them here, and we are really thankful to you. The final thing is, how could this conference be successful? Because we had only 1 month, and we were desperate that somehow this conference has to go through. Myself, Shashiji, and Balramji, we were really worried. And at that moment, we realized that only our hope is Shashiji Tiwari. So, she was reluctant in the beginning, but we persuaded her, and eventually we had to use our charm to tell her that, please, we are desperate, we need to have your help, and I think she went out of her way. I tell you, I'm not trying to sort of please her or something like that, but without her help, without her dedication, without her sincerity, this conference would not have been possible. So please give her a big hand. Along with that, I'd like to also thank the volunteers. Aparnaji, you have done a great job. Thank you very much. I know that you've been doing great work. So many of volunteers, I'd like to thank them also. And I'd like to thank also the catering people who have done a good job. I think the food has been pretty good here, I'm sure you like it. So we should be thankful to them. And finally, I think I would once again request you all that please keep in mind that WAVE is a platform where you can join us. If young people, particularly who have participated, we are so grateful to you that eventually we as old people, we must get out and the young people must come in, and only the organic growth will help us. Yeah. And also I must be thanking people who have done the cultural program here. I thought, I don't understand. I've not studied Sanskrit that much. When I was a young student here in India, at that time we learned Sanskrit, so I can read, probably can understand, but I do not write. But the Sanskrit program, that drama that you people did was excellent. I could understand it. Thank you. Finally, I just want, once again, I request young people, please join this movement, because if you want Hinduism, Vedic religion to survive, that is the only hope is the young people. Otherwise, we are going to have problems, and as Conrad said that we are having problems. We should not feel that everything is fine, because 1,000 years of history, we must learn from that, and we have not learned as yet. See, you must believe that, yes, you were a great people, but then today, that time, the India was far ahead in the world. We were a much bigger geographically. Today, we are a small India. So we have lost that much part of it, and if we are not careful, we may lose a lot more part of this country also. So we should not be sort of sitting and saying that, oh, everything is fine, everything is going to. No, it's not going to be. We have a lot of adversaries, and we must be careful of that. With all that, thank you very much once again. Please line up for the photograph. Thank you. Sumadhur
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ा इधर से थोड़ा सा कुछ इधर आ जाइए इस साइड से बीच में रख देते लोग अपना किनारे में रखते टोपी तक नहीं आ रहा था, टोपी वालों को थोड़ा और करना पड़ेगा। सर नीचे बैठ, थोड़ा इधर आ जाइए। अरे इधर आ जाओ। सर पीछे जाना पड़ेगा, नहीं आएगा। हमारा नहीं है, मेरा तो सब आ रहा भाई। तुम्हारा अरे आधी आधी करके ले लो ना। यस थोड़ा हंस दीजिए कम से। ले लो जितने उतने ले लो।